Okay, so we have done with polyesters, बच्चों, and today we are moving towards polyamides. So let's start this. Polyamide. तकरीबन सारी चीजें बच्चों सेम होंगी, सेम तकरीबन, बस आपके पास लिंकेज डिफरेंट होगा, मोनोमर डिफरेंट होंगे, ठीक है ना. एंड इफ यू आर गोइंग टू फॉर्म पॉलीएमाइड्स, सो बच्चों व्हाट शुड बी द मोनोमर वी नीड टू यूज. अगर आपको याद हो अपना ओ लेवल्स, तो उसमें आपने यूज किए थे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन आपने यूज किया था, और दूसरा आपने यूज किया था कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन का कॉम्बिनेशन. सो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन यूज करोगे आप, तो आपके पास बनेगा पॉलीएस्टर. और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो आपके पास बनेगा क्या? आपके पास बनेगा एमाइड. You can even use acyl chloride as well in place of carboxylic acid for the fast reaction. ठीक है ना. फर्क सिर्फ इतना होगा, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन यूज करोगे तो जो एलिमिनेट मॉलिक्यूल होगा इट शुड बी वाटर. जब आप एसाइल क्लोराइड और अमाइन यूज करोगे तो जो मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा इट शुड बी HCl. ठीक है ना. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि यहाँ पर जो आपके पास लिंकेज बनेगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O होगा, और जबकि एमाइन का N और H होगा. सो दिस लिंकेज वुड बी फॉर्म ओवर हेयर, इसको हम एमाइड लिंकेज बोलते हैं. इस लिंकेज को हम बोलते हैं एमाइड लिंकेज. एंड दिस लिंकेज कैन आल्सो बी नोन एज पेप्टाइड लिंकेज इफ यू हैव प्रोटीन. पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन में कहलाता है ये. तो प्रोटीन इज वन ऑफ द, यू कैन से दैट, नेचुरल पॉलीएमाइड. तो उसमें आप इसको पेप्टाइड लिंकेज बोल सकते हो, और वैसे आप आर्टिफिशियल में एमाइड लिंकेज बोलोगे. सो द थिंग वुड रिमेन सेम एज वी टॉक अबाउट इन पॉलीएस्टर्स, कि अगर आपके पास एमाइड लिंकेज, अगर आपके पास एमाइड लिंकेज आपके पास सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सो इट वुड बी नोन एज नेचुरल polyamide. It would be considered as natural polyamide. और उसके पास आपके पास सिर्फ होगा एक मोनोमर, जिसको आप बोलोगे कोमोनोमर, और उसके अंदर एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ आपके पास क्या होगा, एमाइन होगा. ठीक है ना. अगर आपके पास एमाइड लिंकेज अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप उसको कंसीडर करोगे बच्चों क्या, इट वुड बी आर्टिफिशियल polyamide. Then it should be artificial polyamide. और अगर आपके पास artificial polyamide होगा, then you should have two monomers. Each monomer like this, कि एक मोनोमर में दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और एक मोनोमर में दोनों तरफ आपके पास क्या होगा बच्चों, एमाइन होगा. एमाइन, एमाइन मोनोमर में एमाइन, कि जब मिलेंगे तो एमाइड बनेगा. सही है. सही. ओके एवरी वन ऑफ यू, ये वही सेम चीज है जो आपने पॉलीएस्टर में पढ़ी है, बस इस बार हमने मोनोमर चेंज करके पढ़नी है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द आर्टिफिशियल वन, एज वी टॉक अबाउट इन पॉलीएस्टर्स एज वेल. आर्टिफिशियल पॉलीएमाइड. आर्टिफिशियल पॉलीएमाइड कैसा होगा बच्चों? इफ यू वांट टू फॉर्म आर्टिफिशियल पॉलीएमाइड, सो यू शुड हैव वन मोनोमर, जिसके दोनों साइड पर यू शुड हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, and you have one more monomer, जिसके दोनों साइड पर you should have amine. Should have amine. So with this one you can only form one repeat unit, and the same condition over here as well. जैसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH दे रहा था, अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH ही देगा, और जैसे पहले अल्कोहल अपना एक H दे रहा था, यहाँ पर भी अमाइन अपना एक H देगा. So they are just going to combine together in this way. Carbon double bond oxygen. This is the chain between carbon and oxygen double bonds, and then this is the chain between nitrogen and hydrogen, over here. They just combine together to form a polyamide. So this is one of the repeat unit, as we just draw this with carboxylic acid and amine, so the water molecule eliminates, right? And if you want to do this for two molecules, and if you want to do this with acyl chloride, you can even do this with acyl chloride. Acyl chloride is like the same molecule with Cl over there, और एक आपने ये amine ले लिया इस तरफ, like this. These are one molecule of each. Now I'm just drawing one more molecule
of each like this. So the repeat unit will be 2 repeat unit over there. It will be 2 molecule of each like this. So again, the same condition would be followed, that this time we don't have OH, so definitely chloride will be removed from acyl chloride and H would be removed from amine. The same condition, right? So what you would have in the end, it would be like this, that carbon and oxygen double bond, then the chain of this, and then carbon and oxygen double bond, then it connects with N and H, then the chain of this one, and then N and H, and then you will have carbon double bond oxygen, then this one, and then carbon double bond oxygen, then N and H, then this one, and then N and H, and like this. As we have 1, 2, 3. So we have 3 HCl molecules, right, बच्चों? सर यहाँ पे 4 HCl क्यों नहीं होंगे? 4 HCl तब होते जब ये यहाँ कनेक्ट होता किसी और से, जब ये कनेक्ट होता किसी और से, ठीक है ना? तो सर ये दोनों कहाँ चले गए? ये डेफिनेटली किसी दूसरे मॉलिक्यूल से मिल रहा होगा। हमने इसको सिर्फ दिखाया है कि हमने कनेक्ट करते हुए दिखाया है, क्योंकि हमने अगर यहाँ पर एक और मोनोमर हम यहाँ बनाते तब ये उसके साथ मिलकर क्लोराइड और ये H मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते, बट अभी हमने दिखाया नहीं, वी जस्ट शो 2 रिपीट यूनिट। अगर आप एक और मॉलिक्यूल बना दोगे तो फिर 3 रिपीट यूनिट्स हो जाएंगे आपके पास। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। जी बेटे। वो जो हमने ऊपर पॉलीएमाइड की फर्स्ट एग्जांपल करी NH2 वाली, तो उसमें जो NH2 में से जो अमाइन में से जो H निकला वो दोनों जाएंगे या एक होगा कंबाइन OH के साथ? अल्कोहल में जैसे एक H जा रहा था, इसी तरह अमाइन भी एक ही H देगा, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड OH दे रहा और अल्कोहल एक H दे रहा था, सेम एज इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड OH ही देगा, यहाँ पर अमाइन अपना एक H देगा, ठीक है? ओके सर। Now, because this is just a journal pattern over here, जो मैंने आपको बना के दिखाया, this is a journal one. Now let's talk about one example. Example में आपके पास बड़ी common example जिसका नाम भी आपने O levels में याद किया था, हमने नाम किया था nylon. Nylon is the one of the basic example of artificial polyamides. This is artificial polyamide. So let's see ये होता actual में कैसा है. So if you talk about polyamide, artificial polyamide, so it is what? It is nylon. तो इसके मोनोमर्स कौन से होते हैं? इसके मोनोमर्स देखें, ये होते हैं आपके पास, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है, और ये O और H आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में आपके पास CH2 के 4 बैक टू बैक CH2s होते हैं, and then this will be one of the monomer for a nylon, and the second monomer we have nitrogen and hydrogen bonds over here, and in the center we have back to back 6 CH2s. These are 2 monomers for nylon. Now it's quite simple for you to draw the structure of this. We can draw this in this way, that all the time carboxylic acid losing OH and amine lose H, like over here, like over here. So it will give you what? Nylon structure. So it should be like this, C double bond O, then we have bracket CH2 4 times, then C double bond O, and then it is going to attach with nitrogen and hydrogen, and then it has back to back 6 CH2s, and then again nitrogen and hydrogen, and this bond. This is extended bond, and we just have one water molecule to produce over here. So this is what? This is nylon 6,6. This is known as nylon 6,6. Why we call them 6,6 nylon? Because you can see this in each of the monomer. In each of the monomer, you have 6 carbons. Just look at over here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and these are 6. So each molecule containing 6 carbons. That is why we are calling this is 6,6 nylon. Got it, every one of you? Yes, got it. So this is what? This is artificial polyamide. One of the example you have, which is known as nylon, right? We have one more example. Just look at over here. We have one more example for this, and which is known as Kevlar. This is Kevlar. Kevlar is also one of the example of artificial nylon. It is very useful. You can say that for artificial polyamide, and it would like this. You have one of the monomer in this form, along with the benzene ring. You have 2 NH,
like this. On both and you have NH2 over here, and you have one more monomer, which is again benzene ring, and on the both ends you have what, bacho? You have acyl chloride. You have acyl chloride, like this. So they just combine together to form one of the biggest, or you can say that one of the very useful polymer. It would be like this. For this, you need to make them horizontal. So I'm just going to draw it in this way, that one of the monomer, I'm just drawing it in this way, so it would be easier to draw. इसके दोनों एंड पर n लगा हुआ है, ठीक है ना? इसने क्या किया, एक एक h को लॉस कर दिया, like this, right? और ये दूसरा वाला जो आपके पास बेंजीन रिंग था, इसके दोनों एंड पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ था, इसने क्या किया, इसने क्लोरीन लॉस कर दिया. Yeah, and this will be like this. So this is one of the structure of Kevlar. This is what? Kevlar, right? This is very, very important one because it has very strong structure. It is this very strong structure, right? You can say that Kevlar is very strong structure. It is strong structure. Even it is more stronger than benzene. It is strong structure, stronger than benzene. Definitely stronger than benzene. Why it is stronger than benzene? Because it contains hydrogen bonding. It can do hydrogen bonding. That is why it is strong enough. It is more stronger than benzene, right? It has strong hydrogen bonding, and also it is stronger than nylon because it has stronger van der Waals forces. It is stronger than nylon. It is even stronger than nylon because it has strong van der Waals forces, right? Because it is a structure like that कि ये van der Waals forces जनरेट कर सकता है. तो इसके अंदर दो इनिशियल, एक तो इसका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है, दूसरा ये कि इसके अंदर दो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस मौजूद हैं. That is why it's very important. सही है भाई? Yes, sir. And that is why, because of this extraordinary strength, it used in, you can say that it is used to form ropes, right? It is used to form ropes. Many of the ropes are going to be made by Kevlar, right? And also it can be used in the formation of blood-proof jackets. It is also used in the formation of blood-proof jackets, right, bacho? Just because of their strength. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Any Sir, ये problem? यस सर केवलॉन में Kevlar. में 2 HCl नहीं बनेंगे क्योंकि एक H एक Cl एक H एक Cl लूज हो रहा है ना. देखो मैंने ये लूज नहीं किया है, मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पर बॉन्ड बनेगा. अभी पिछला सवाल भी बच्चे ने अमर ने यही किया था. मैंने बोला अभी आपके पास है ही नहीं, अगर आप यहाँ कोई और मोनोमर लगाओगे तो उसके साथ ये अटैच होगा तब जाके HCl बनेगा ना. अभी तो मैंने बनाया नहीं, अभी तो मैंने एक ही रिपीट यूनिट बनाया है. सही है? सही है सर. बनेगा तो अभी बीच में, अभी आपके पास स्ट्रक्चर में पॉलीएमाइड कितने बने हुए हैं? एमाइड का लिंकेज ही एक बना हुआ है, पूरा एमाइड का लिंकेज एक बना हुआ है. एक लिंकेज बना है तो एक ही HCl रिमूव हुआ होगा. जब ज्यादा लिंकेज बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली HCl प्रोड्यूस होंगे. अभी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे आपने जो बॉन्ड दिखाए वो तो एक्सटेंडेड बॉन्ड है, वहां तो आपने स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं है. आप स्ट्रक्चर तो बनाओगे ना, पहले एमाइड लिंकेज बनेगा तभी तो HCl रिमूव होगा ना. वहां तो एमाइड लिंकेज बना हुआ ही नहीं है हमारे पास, है ना? आधे आधे हैं दोनों एमाइड लिंकेज. तो इसका मतलब ये थोड़ी है आधे आधे एमाइड लिंकेज बने में तो हम उसको सपोज करेंगे एक पूरा और HCl रिमूव कर देंगे वहां पर. ऐसा नहीं है, ठीक है? यस सर. और सही है. ब्लड प्रूफ जैकेट का क्या मतलब? ब्लड प्रूफ जैकेट का मतलब ये है कि इफ यू वेयर द जैकेट एंड यू जस्ट हैव वन शॉट ऑन योर चेस्ट, सो यू विल सी दैट कि आपको कुछ नहीं होगा, आप बच जाएंगे, है ना? कराची के अंदर इसका बड़ा काम है. आप इसको पहन के घूम सकती हैं बाहर. अगर चोर आपसे कुछ मांगने आए और आप उसको ना दें तो अगर वो आपको फायर भी करेगा तो आपको कुछ नहीं होगा. बट ये याद रहे कि ब्लड प्रूफ जैकेट जो है सिर्फ और सिर्फ आप
एज अ जैकेट पहन सकते हैं। तो आपके ऊपर वाले हिस्सों को सेव रखिए, ऐसा ना वो सर पे मार दे गोली तो आप बोलेंगे ब्लड प्रूफ जैकेट है, पहनी भी है तो सर पे भी नहीं लगेगी गोली, है ना? सही है यस भाई? सर, यस सर। इसको आप अपने पास नोट कर लें, फिर मैं आपको स्किल टेस्ट दूंगा, आप लोगों को वो करना होगा। Okay, so we already have done about artificial polyamides. So let's start with natural polyamide, right? Natural polyamide, and you need to keep remember whenever you will have a polyamide in natural way, it's the best example for this is protein. Best example, right? So protein are actually one of the product of polymerization, which is actually done by the polymerization of amino acids, right? Before that, we just need to see what is natural polyamides. We know that in that case, we just have a single monomer. We just have a single monomer, and in this monomer, we have both the functional groups. So over here, I have amine, and over here, I have carboxylic acid, or even if you can have this acyl chloride also. And over here, again, we have carboxylic acid, and we have एमाइन। बच्चों देखो सीन ये है कि जब आपके पास एक ही मोनोमर है और उस एक ही मोनोमर में आपके पास दोनों फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है कि भाई अमाइन अमाइन के साथ तो नहीं मिल सकता ना, अमाइन मिलेगा ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। अमाइन अपना एच देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना ओएच देगा, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, पॉलीमर बना लेंगे। तो इस वजह से इनकी जो डायरेक्शन होती है इनके लिंकेज की वो सेम होती है, ठीक है ना? उसके एक तरफ पे अमाइन होगा तो दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तभी मिल सकता है। अमाइन से अमाइन नहीं मिल सकता, तो उसको फ्लिप होकर ही लगना पड़ेगा, ठीक है ना? तो इस वजह से इनकी डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, मतलब सेम डायरेक्शन होती है। तो अगेन वी आर गोइंग टू form a bond over here in this way, and you will have a natural polyamide in which you have back to back same, or you can say that in the same direction you will have what? You will have amide linkages, right बच्चों? All the time it would be in the same direction. You can see this, पहले N आएगा और NH और H आएगा, उसके बाद ही आपके पास C डबल बॉन्ड O आएगा, Got so it. it is always okay। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल कौन सी करूंगा भाई? मैं इसकी एग्जांपल मैं करूंगा प्रोटीन की, ठीक है ना? इसकी मैं प्रोटीन की एग्जांपल करता हूँ। अच्छा, प्रोटीन के अंदर जो एमाइड लिंकेज होता है इसको हम पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, ठीक है ना? इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो भाई एक अमाइनो एसिड ले लेते हैं, उस अमाइनो एसिड को लेकर हम देखते हैं कि क्या उसका हम पॉलीमर बना सकते हैं। और आई जस्ट वांट टू हैव द डिफिकल्ट वन ओवर हियर। कौन सा डिफिकल्ट वाला ले सकता हूँ? मेरे पास इतने सारे यहाँ पर अमाइनो एसिड्स हैं, मैंने अभी ये वाला ले लेना है, ठीक है ना? ये वाला, ये इसका नाम है फिनाइल एलानीन, ठीक है ना? ये एक मोनोमर है, इसका नाम है फिनाइल एनालीन एलानीन, ठीक है ना? तो इट इज लाइक दिस कि आपके पास ये यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक है ना? इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर कार्बन है, ठीक है ना? यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। इसके साथ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर आपके पास NH2 लगा हुआ है। So it is like this, ठीक है ना? इस तरह का कोई एक यहाँ पर आपके पास अमीनो एसिड है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फिनाइल, इट इज फिनाइल एलानीन, ठीक है ना? ये एक आपके पास मतलब एक अमीनो एसिड है, ये आपस में पॉलीमराइज होंगे और आपके पास क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो लेट्स सी कि ये कैसे बनता है। तो मैं पहले इसको आसान अल्फाजों में बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। मैं इसको कुछ इस तरह से बनाता हूँ, देखें, कार्बन और ये नाइट्रोजन को ना मैं यहाँ लगा देता हूँ और ये हाइड्रोजन मैंने इस तरह कर दिया आपके आसानी के लिए। और जो ये कार्बन था, इस कार्बन को मैंने ऊपर करके इसके ऊपर मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया ताकि आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर आसान हो जाए, ठीक है बच्चों? अब ये आसान हो गया, अब इसका पॉलीमर बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फॉर सपोज अगर मेरे पास एक और इस तरह का मोनोमर होता, यानी कि मेरे पास एक और इस तरह का क्या होता, अमीनो एसिड होता, सो दे जस्ट combine together to form what? Protein. कैसे बनाएंगे प्रोटीन? We know that H from amine and OH from carboxylic acid, right? And they will give you the polymer.
and it would be like this, that N extended bond, this is H, this is carbon, this is another carbon, and on this carbon we have benzene ring. यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, 2 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है ना? So it should be 2 hydrogen, 1 hydrogen, and then C double bond O, and again N and H, and then CH, CH2, and then benzene ring, and then it will be like this, right, बच्चों? Any problem? No, sir. No, sir. This is what? This is amide linkage. This is what? This is amide linkage. We can call this as amide linkage. लेकिन आप इसको peptide linkage भी कह सकते हो, because we have right now we have natural polyamides. That is why ये linkage ही जो peptide amide linkage ही जो था उसी को हम peptide linkage ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास natural polyamide है इस वक्त. All right, every one of you, or not? Yes, sir. So you can now do this in your copy. और हमारे पास यहाँ पर amides, polyamides और polyesters जो हैं complete हो जाते हैं. कल की क्लास में इंशाल्लाह हम हाइड्रोलिसिस करेंगे.